Welcome to the Corporate Poacher channel. So yeah, it's the first review video that I'm doing, and it is about Manchester United. And when they were facing West Ham, we have suffered another loss, guys. We lost the match. We lost it 2-0, and पता नहीं यार क्या हो रहा है. मतलब it's been such a long time that we have had that winning feeling in the Premier League. मतलब लास्ट प्रीमियर लीग मैच कब जीता था मेरे को याद भी नहीं आ रहा है. मतलब it's like so it's blur guys, it's blur. But yeah, we are going to talk about the match, what happened. So I didn't have the chance to watch the full match because I was live streaming Madrid versus Barcelona, but I did watch the highlights. I did see a lot of things that went bad. Defensively went bad, attacking wise missed chances and a lot of things. So we are going to talk about those things. So first of all, क्या ही घटिया 2 गोल हमने खाया. But I won't say like this is not expected. We have conceded these type of goals in all the matches in this season, in the Premier League especially, not in the Europa League, mind you. In the Europa League we haven't conceded these kinds of goals. I don't know why. Europa League में क्या हो जाता है, टीम players same रहते हैं, but the urgency is different in the Europa League. But when you see in the Premier League, we are conceding these type of silly goals, and अपने ही box में we are not defending players. The first goal that we conceded, Suchek scored, and मतलब खुल जाती है हम लोग की डिफेंस. Like it was like there was no urgency to stop the player, and मतलब 3 जन गोल के पास ही खड़े 3 डिफेंडर्स, एंड कोई भी बॉल नहीं रोका. कोई भी बॉल रोकने नहीं जा रहा है कि क्रॉस नहीं आने दे, बट दे आर लेटिंग द क्रॉस कम इन, एंड देन इट्स टू लेट. यू आर नॉट मार्किंग योर मैन, एंड यू जस्ट आप बस खाली छोड़ रहे हो अपने मैन को. एंड हैरी अमास पता नहीं, मतलब आई डोंट नो इफ यू कुड डू मोर, और द फ्रंट जो उसके डिफेंडर्स थे, दे कुड हैव स्टॉप द क्रॉस और द बॉल दैट शुड हैव कम इन. But we conceded early, and then again it was embarrassing, the goals that we have conceded. The second goal also the same. Ugarte रुक गया. मतलब I haven't seen him, मतलब the matches that we have seen, I have always seen him committed, running. I think this is sort of an energy issues as well, कि बैक टू बैक दे आर प्लेइंग मैचेस, बट देन आप बॉल लूज़ कर रहे हो. एक चलो ठीक है, आपने बॉल लूज़ कर दिया, ठीक है, बट आप भागो तो सही. ये डिफेंड दैट मार्क. वो बॉल हारा, वो अटक गया. एंड इफ यू हैव सीन रूबन सामर's प्रेस कॉन्फ्रेंस, वन न्यूज़ रिपोर्टर आस्क्ड हिम कि what do you think about how Ugarte stopped, and he said that he doesn't want to comment about any specific player or about his mistakes. It's a whole team game, I understand, but then it was so evident, like there's some sort of fatigue in a team, and some sort of a contempt कि हाँ it's okay, we are losing. प्रीमियर लीग में हारते ही है हम लोग. हारे भी तो क्या है, 16 रहना है, जीते भी तो 15 होंगे, ऊपर और जा नहीं सकते. सो इट वॉज लाइक द प्लेयर अ कंटेम्प्ट नाउ कि प्रीमियर लीग में हम हारे तो चलेगा. आई नो देयर आर ओनली 3 मैचेस लेफ्ट, बट दिस इज़ नॉट अ फीलिंग ऑफ अ बिग क्लब. दिस इज नॉट अ फीलिंग ऑफ रिप्रेजेंटिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड. आपको हर एक मैच जीतना है, चाहे चलो ठीक है, वी नो योर पोजीशन इज़ वेरी बैड इन लीग, वेरी बैड, बट आप जान तो लगाओ अपनी. उसने बॉल खोया, वो छोड़ दिया, एंड देन हमारा मिडफील्ड दिखता ही नहीं है कभी. एंड देन नो वन, आराम से कुडुस बॉल लेके आ गया, उसका शॉट ब्लॉक भी हुआ. एंड देन एडन वन-बिसाका, देयर राइट बैक, इज असिस्टिंग टू बोवेन. मतलब उनका राइट बैक इतना आगे है, इतना चढ़ के खेल रहा है, एंड वो खाली, एकदम खाली. एंड फिर से 3 डिफेंडर्स थे. अगर आप देखो वैन-बिसाका एंड बोवेन के बीच में देयर वर स्टिल 3 डिफेंडर्स, नन ऑफ देम मार्क्ड बोवेन. एक जन चलो ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि वैन-बिसाका बॉल रोकने जा रहा है, ठीक है, दैट टेक्स आउट 1 डिफेंडर्स, बट देन यू हैव 2 डिफेंडर्स. 2 डिफेंडर है आपके पास, तो आप रोको ना. आप एक जन मैन मार्क कर, एक जन बीच में रख ताकि बॉल स्टॉप कर पाऊँ,
एक जन तो मैन मार्क करो, नहीं, तीनों अंधाधुन खेले हैं. And these type of goals are so common for Manchester United to concede right now. I don't know what's happening, why. कुछ ट्रेनिंग में इश्यूज है, बट देन ट्रेनिंग में भी मैं इश्यूज नहीं बता पा रहा हूँ बिकॉज यूरोपा लीग में ऐसे गोल नहीं खा रहे हम लोग. एंड I watched Ruben Amorim's press conference after the match. There was something that he mentioned thrice or 4 times or even 5 times, was that there was no urgency in defense. And he mentioned the same thing that I'm saying, that कि यूरोपा लीग में द अर्जेंसी कम्स इन बट प्रीमियर लीग में द अर्जेंसी इन डिफेंस इज नॉट किकिंग इन. सो व्हाई इज दैट? व्हाई इज दैट? एंड ही मेंशन्ड दिस थिंग 5 to 6 times इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस कि देयर इज नो अर्जेंसी इन डिफेंस. एंड दैट वाज सो क्लियर टू सी. आप मैन मार्क नहीं कर रहे हो, आप क्रॉस रोकने नहीं जा रहे हो, तो कैसे चलेगा भाई? मतलब आप खुद बताओ कैसे चलेगा? मतलब यू आर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू आर नॉट Ipswich Town, आप टॉटनहम, मतलब चलो टॉटनहम छोड़ो, you are not some mid-table club, you are Manchester fucking United. And that is what another thing that Ruben Amorim said, which actually hurt me deeply as a Manchester United fan, is that players are becoming okay of losing. मतलब he said in a line कि we don't have that guilt feeling of losing. Like, we are not fearful of losing. If we are losing, it's okay for us. And that is not how Manchester club should be. That is not how big club should be. He literally said this. Ki it's embarrassing that we are okay with losing. And like a big club like Manchester United, he mentioned that कि इतनी बड़ी club होके we can't afford to lose. अगर हम एक game Old Trafford पे हारते, it should be the end of the world for us. He said that. And he was looking so sad, I would say, so desolate. वो लग रहा था कि मतलब he was also confused कि एक बार प्ले आप यूरोपा लीग में ऐसे खेल रहे हैं एंड एक टाइम प्रीमियर लीग में ऐसे खेल रहे हैं. he is also confused कि why. and the people and the reporters asked कि are your players, are Manchester United players choosing which match to play? And he was like, if that's the case, then it's going to be a big problem, because you can't have moody players in your team. You can't have players that will play in the Europa League. चलो ठीक है, प्रीमियर लीग में नहीं खेलूँगा, बट यूरोपा लीग में अच्छा खेला तो टीम में सेलेक्ट ही रहूँगा, टीम में रहता रहूँगा. दिस इज़ नॉट हाउ यू मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर शुड बी. एंड आमोरिम ने ये बात बोली अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यूरोपा लीग में देयर इज अ सेंस ऑफ मोटिवेशन for the player. It's like a cup game, so we need to win to move forward. Now in the Premier League they don't have that motivation anymore. They don't have it. So that is why maybe some players are dropping off their energy levels, they are dropping off their pressing levels to just, ठीक है भाई प्रीमियर लीग है, हारे भी तो सेम ही पोजीशन में रहेंगे, जीत के भी कुछ ऊपर नहीं जा रहे. This is what he said कि यूरोपा लीग में there is something different. The Europa League में he said the urgency in defense is also different. And one thing that he said what resonated with me is that he's not concerned about the final. He's not concerned about the Europa League final, and he rightly said that there are bigger things that needs to be addressed in Manchester United right now, apart from that Europa League final. There are bigger things, there are deeper things inside Manchester United club that they need to do better at. That वो जो चीज़ें जो deep level पे enrooted है उसको ठीक करना पड़ेगा. And he said कि before the start of the next season we need to do this. We need to sort this deeper level of problems in Manchester United Football Club. And वो बोल रहे कि अगर, and he also doesn't know कि if winning Europa League is a good thing or not, because Manchester United is not Champions League ready. He said that कि हम प्रीमियर लीग में नहीं जीत पा रहे, चैंपियंस लीग तो हमारे लिए चांद के बराबर है, चांद पे जाना के बराबर है. So it's actually ridiculous how Manchester United is playing. The defense looks so fragile, and attack में भाई मतलब Højlund had so many chances. I saw the highlights. There were 3-4 clear-cut chances where Højlund could have scored. मतलब I don't know उसको क्या इतना confidence lack कर रहा है वो, या फिर उसका quality ही है. I like him. Like when he came to United, I liked him as a player. I liked his attitude. And last season was not that good, but I backed him कि चलो इस season वो कुछ करेगा. But then इस season तो ऐसा goal drought पे जग गया है वो कि क्या ही बोलूँ मैं.
मतलब कल तो 2-3 चांसेस में उसको एक तो कन्वर्ट करना ही था, अगर एक भी कन्वर्ट करते देन इट कुड हैव गिवन अस द मोमेंटम टू बी बैक इन द गेम. बट आई डोंट नो उसका कॉन्फिडेंस किधर गया है, कहाँ गया है, मैनेजर उसको कॉन्फिडेंस दे नहीं पा रहा है या वो लेना ही नहीं चाह रहा. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद हिम. बट देन we need to get a new striker, guys. We need to get a new striker. Hoyland से नहीं हो रहा. Zirkzee is not that potent. Zirkzee is good in link-up play. He's very good in I think the number 10 role where he plays very links up with other players and gives and उनको भी game में लेके आता है. So that he's very good at. But I don't know कि we have two strikers, but none of them act as a striker right now. So yeah, it was another dreadful match for Manchester and the Premier League, and it's like it's normal routine now for Manchester and Football Club to lose in the Premier League. Like जीतना तो हमारे लिए चांद पे जाने के बराबर हो गया कि साला जीत कैसे गए प्रीमियर लीग में एक मैच, और यूरोपा लीग में हारते नहीं है. अनबीटन टीम इन यूरोप एंड फकिंग 16 इन द प्रीमियर लीग. मतलब हाउ कैन यू इवन, मतलब कैसे दोनों चीज़ को आप कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो, मेरे को नहीं पता. इट्स आउट ऑफ माई कैपेसिटी. बट देन समथिंग नीड्स टू चेंज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड बिफोर द नेक्स्ट सीजन किक्स इन. Amorim is stressing on it. There are some deeper related issues that needs to be fixed in the club. That needs to be fixed, and I just hope as a very loyal Manchester United fan, I just hope that my club could sort these things out, guys. मतलब because हम फुटबॉल फैन जानते हैं कि हमारे लिए हमारा क्लब क्या है, ठीक है. You see Barcelona, they have done fantastic this season. They were also a transition club, but जैसे ही Hansi Flick आया, he installed his ideologies, and साला क्या खेल रही है बारसा. 4 back-to-back एल क्लासिकोस मैड्रिड को हराए. So something वैसा कुछ हो जाए. And यूरोपा लीग में we have seen that Amorim tactic is working. We are unbeaten in Europa League. I know there are some matches which we should have drawn or lost, but then luck हमारे साथ था यूरोपा लीग में. But then प्रीमियर लीग में लक भी नहीं है, खेल भी बहुत बेकार रहे. So I don't know what to say. I don't know where this club is going as a whole. बस एक ही है कि यूरोपा लीग जीत जाए, कम से कम एक ट्रॉफी आ जाए, and that is also another Premier League side against Tottenham. So that could be a very difficult match for us, because हम Premier League opponents के साथ नहीं खेल पा रहे यार, हम नहीं खेल पा रहे. So having a Premier League opponent in the Europa League final is a tough fixture for us, but I hope that something could be done by our team and बस जीत जाए कैसे भी करके. But and still as a fan I still don't know like if it would be a good thing for us to go into the Champions League with this kind of a team. मेरे को सच में नहीं पता. दिल से मैं चाहता हूँ as a fan I'll always want कि हाँ साला Champions League खेले, that Tuesday Wednesday night Champions League का थीम बजे, मज़ा आए देखने में, बड़े बड़े क्लब्स के साथ खेले. We should be back where we belong. But then are we ready, guys? Are Manchester as a football club ready for Champions League football? I don't think so. So इसी बात पे एनालिसिस एंड करते हुए, I know there will be a lot of new people who will be watching this video on my channel. बहुत सारे पहले वाले लोग भी देख रहे होंगे, repeated viewers will be seeing the video. So please, I urge you guys to just subscribe to my channel. A lot of videos will come in. A hardcore loyal Manchester United fan, but I stream all the football watch-alongs. I recently streamed the El Clasico as well, and gaming streams भी आएंगे, FIFA related streams आएंगे, F1 related streams आएंगे. So there's gonna be a lot of content in my channel. So please, anyone who's watching new or anyone who is a repetitive user and who has not subscribed, please do subscribe to my channel. I hope to bring you a lot of quality content regarding football and regarding my favorite club Manchester United. So please press the subscribe button. And yeah, मिलते हैं नेक्स्ट वॉच अलॉन्ग में, नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में. So yeah, bye everyone, take care.